Well, as we speak, we still don't know the cause of the violence, but we will get you all up to speed on this latest development. Right, well, on your left, you can see that the police force is trying to control the irate mob, and on your right, you can see people out on the street disrupting normalcy there. Very, very dramatic scenes, to say the least. And with that, we'll take a very short break. We've got a lot more lined up when we return. Stay with us. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Oh, ba? Oh, ba? অপূর্ব ভ্যারাইটি অপূর্ব মূল্য ডাউনলোড মিশো What's trending? Who are the biggest newsmakers of the day? What are the issues affecting people? Center hand once again extended. Are you ready to agitate? नॉर्थ लाइव सभी को मेरा शुक्रिया. Watch Evening Prime every day at 7 p.m. only on Northeast Live. Welcome back, viewers, and thank you for staying on. Let's take a look at our big story we're tracking. Now, the Union Home Minister Amit Shah today said that he was very hopeful that the interstate border dispute between Assam and Arunachal Pradesh will be resolved before the end of 2023. Addressing a gathering during the Golden Jubilee celebrations of the Ramakrishna Mission School at Diomali in Tirap district, Shah said that while 60% of the interstate border dispute between Assam and Meghalaya has been resolved peacefully, he hoped that by the end of 2023, the border dispute between Arunachal and Assam will also be resolved. सालों से मेघालय और अरुणाचल की, अब मेघालय और असम की सीमाओं के बीच में जो समस्या थी, उसका भी 60% से ज्यादा डिस्प्यूट एरिया को आज शांति के साथ सुलझा दिया गया. और मुझे आशा है अरुणाचल और असम की सीमाओं की समस्या भी 2023 के पहले इसका भी हमेशा के लिए हम समाधान ढूंढेंगे.
Well, Home Minister Shah said that the Ministry of Home Affairs has prepared the agenda of development of the Northeast in 3 parts. Shah added that before Prime Minister Narendra Modi took over in 2014, there was no proper plan in place for the development of the Northeast. और मोदी जी ने 2014 से हमारे उत्तर पूर्व को अनेक समस्याओं से ग्रस्त नॉर्थ ईस्ट को बदलने का शुरुआत किया है। आज 2014 से 2022 की ये यात्रा में 8 साल में मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 50 बार नॉर्थ ईस्ट में नहीं आया है। मोदी जी 8 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की मुलाकात। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता नहीं की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता की है और नई शिक्षा नीति के तहत उनको प्राथमिक शिक्षा उस भाषा में देने की शुरुआत भी की है। चाहे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, हजारों लाखों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए देकर इस हिस्से को भारत के साथ एक आत्मीय लगाव खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि 8 साल के अंदर 9,000 से ज्यादा युवा जो रास्ता भटक गए थे, हाथ में हथियार लेकर अपने ही देश के सामने युद्ध का ऐलान किए हुए थे, हथियार डालकर आज मुख्य धारा में सम्मिलित होकर भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मणिपुर बंद और ब्लॉकेड के कारण 365 में से 200 दिन गतिविधियां बंद रहती थी। वहां पर आज 5 साल हमारी सरकार को हो गए, 6ठा साल चल रहा है। 6 साल में ना एक भी बंद हुआ है, ना ब्लॉकेड हुआ है। बोडोलैंड की समस्या को इतने सालों के बाद सरलता से सुलझाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। त्रिपुरा के हथियारी ग्रुपों को हथियार डलवाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भू शरणार्थियों की समस्या को स्थायी समाधान देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। कार्बी जिलों का शांतिपूर्ण समाधान अभी गृह मंत्रालय में मेरी उपस्थिति में इसका समाधान ढूंढ लिया। Well, the Union Home Minister also lauded the indomitable spirit of the state of Arunachal, which has always upheld the Indian ethos even in the face of challenges. मित्रों, अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसने कई संकट झेले, परंतु भारत के साथ अपना आत्मीय रिश्ता हमेशा के लिए बनाए रखा है। और इसलिए जब भी अरुणाचल आते हैं, यहां से एक ऊर्जा और देशभक्ति के संस्कार लेकर ही वापस जाते हैं। Well, Shah lauded the contribution of Ramakrishna Mission in the field of education and service to the society. मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य का काम है। स्कूल बनाना इससे भी बड़ा पुण्य का काम है, मगर एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाना इससे बड़ी पुण्य की बात कोई हो नहीं सकती। और 50 साल तक रामकृष्ण मठ ने एक काम जहां पर कोई आ नहीं सकता, सोच नहीं सकता, उस जगह पर रहकर सातत्यपूर्ण तरीके से बिना थके, बिना हारे, अक्षय ऊर्जा कहां से मिलती है मैं समझ नहीं पाता। अक्षय ऊर्जा का स्रोत शायद परमहंस रामकृष्ण से प्राप्त करते हैं या चेतना के स्रोत, पूरे देश के लिए चेतना के स्रोत स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्राप्त करते हैं। मगर अक्षय ऊर्जा के साथ
50 साल तक अक्षुण्ण रूप से इस सेवा के भाव को चालू रखने के लिए मैं रामकृष्ण मिशन के सभी सन्यासियों को करबद्ध प्रणाम कर मेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। Well, shifting focus now, the 27th convocation of Northeastern Hill University, Shillong, which was held today, was attended by Union Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship, Dharmendra Pradhan, as the chief guest. Now, a total of 15,955 students were conferred degrees by the Central University, which include 117 PhDs, 8 MPhils, 1,559 postgraduate degrees, and 14,271 bachelor degrees. Now, the convocation ceremony was presided over by NEHU Vice Chancellor Professor P.S. Shukla, who admitted the candidates to their respective degrees. Union Minister Dharmendra Pradhan, while delivering the convocation address, congratulated the graduating students and urged them to contribute towards the society as they walk out of the educational space. And also let me congratulate all the passed out students of last 2 years due to pandemic. The convocation ceremony could not have been organized. It's my luck. I get opportunity to meet all of you. As my great Conrad said, it is your state. Now you are getting into new life. All your good memories with this campus today here. Now responsibility, new kind to start. I wish all success in your life, in your new life. Now, Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma, who attended the convocation as the guest of honor, urged upon the students to contribute towards nation building. In government, we are very scheme oriented. It should not be. Scheme is a means to the end, which is a mission and the purpose, which is to help the farmers to make things grow, agricultural production to go up. And the reason I'm telling you this is because even when it comes to our education, we must remember that it is a holistic picture we are doing. What is our purpose? Are we here to get degree or give degrees? Or are we here to create responsible citizens of our country? Are we here to create and make physically, emotionally, and spiritually strong citizens for our state and our country? Are we here to show that each one of you contributes to your family, to your society, to this country, and the world as a whole? We are here to create responsible citizens. Well, that will take another short break. We'll be back in a bit. Stay tuned. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Salmonella. Absent. Perfect attendance. নিমৰ শক্তি ভৰা নিমাইলে আঁতৰাই 100টা বেমাৰ বিয়পোৱা বীজাণু নিমাইল ঘৰ বিশুদ্ধ ঘৰ कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाया. All the best. We, the people of the Northeast, can also contest it. पूर्वोत्तर में क्या रही आज की सुर्खियां? चुनावी राज्यों की राजनीतिक हलचल। देश विदेश की वो खबरें जिससे है अपनों का खास नाता।
जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार। जानने के लिए देखिए समाचार नॉर्थ ईस्ट हर शाम 6 बजे। What's trending? Who are the big Now, welcome back, viewers. Let's take a look at your headlines one more time. Union Home Minister Amit Shah begins two-day Arunachal visit. Home Minister Shah confident of resolution of Assam-Arunachal border dispute by 2023. List centre's priority for the region. APSU elections turn violent. Scuffle breaks out between supporters of candidates once again. Police resort to use of force to restore normalcy. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma all set to meet Prime Minister Narendra Modi shortly. Flood situation likely to top the agenda for discussion. And the Assam flood situation continues to be grim. Over 8 lakh people in 32 districts affected. Round-the-clock relief and rescue operations continue. Well, violent scenes were witnessed in Assam's Botodraba when a mob of 2,000 people harried a police station. Well, as per inputs, the chaos unfurled following the death of a person identified as Safiqul Islam, who was reportedly died in the police custody. Well, the irate mob surrounded the police station and set it on fire. It is learned that the Botodraba police had allegedly demanded rupees 10,000 cash from Safiqul, who was a fish trader. However, when he refused to oblige, the police allegedly beat him up and arrested him. But he later died in police custody. Locals have alleged that Safiqul died of torture by the police personnel who tried to cover up the incident. Well, it is yet to be ascertained as to why Safiqul was arrested. Well, violent scenes, as you can see, were witnessed in Assam's Botodraba when a mob of 2,000 people harried a police station. Now, as per inputs, the chaos unfurled following the death of a person identified as Safiqul Islam, who was reportedly died in the police custody. The irate mob surrounded the police station and set it on fire. It is learned that the police had allegedly demanded rupees 10,000 cash from Safiqul, who was a fish trader. However, when he refused to oblige, the police allegedly beat him up and arrested him. He later died in police custody. Locals have alleged that Safiqul died of torture by the police personnel who tried to cover up the incident. Well, for now, it is yet to be ascertained as to why Safiqul was arrested.
আজি এটা ইনসিডেন্ট হৈছে য'ত পাব্লিকৰ মেম্বাৰ্স আহি পিনে এটাক কৰিছে কালপ্ৰিটছ মিস্ট্ৰিয়েন্স কেইজনমান আহি পিনে আমাৰ বটদ্ৰৱা থানাত জ্বলাই দিছে সো এতিয়া তাৰ ভিতৰত যোনে যোনে এটাক কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত আমি তিনিজন মিস্ট্ৰিয়েন্স অলৰেডি আমি এৰেষ্ট কৰিছো আৰু বাকি যিমানখিনি মানুহ ইনভলভ আছিলে আমি তেওঁলোককো বিচাৰি পিনে আমি আটক কৰিম আমি গোটেইখিনি ষ্টাডি কৰিম আমাৰ ভিডিঅ' ফুটেজ আছে সো আমাক মিডিয়া সাংবাদিকসকলেও আমাক সেইটো হেল্প কৰিছে আমাক ফুটেজখিনি দি পিনে আৰু আমাৰ নিজৰ লগতে যিমানখিনি আমি পাওঁ এই গোটেইখিনি আমি ভালকৈ এনকুৱাৰী কৰি আমি যোনকেইটা দোষী মানুহ দেখা পোৱা যায় আটাইকেইজনকে আমি ধৰিম অভিযোগ আহিছে আমি সেইটো ফালেও পুৰা আমি এনকুৱাৰী কৰিম আৰু তাত যদি দেখা যায় যে আৰক্ষীৰ কিবা ভুল আছে আমি সেইটোৰো ব্যৱস্থা ল'ম Staying with news from Assam, in a shocking instance of hit and run, a car in Guwahati rammed at least 5 vehicles this afternoon. Well, as per inputs, the speeding car rammed 3 cars from Ganesh Mandir area to Ganeshguri. Now, along the way, 1 scooter and a motorbike were also knocked down by the vehicle. While the vehicle finally halted after it collided at the flyover pillar. The incident stirred chaos in the entire locality. কেইখন মাৰিছে ড্ৰাইভাৰটো ক'ত গ'ল ইয়াৰ ড্ৰাইভাৰটো ক'ত গ'ল ইয়াতে আছে Well, shifting focus now, although the situation has slightly improved in Assam's Dima Hasao district with the decrease in rainfall, the people are still in distress with things yet to normalize. Now, among the different parts of the Hills district, Maibong is one of the subdivisions which has been badly hit by nature's fury. Now, as per reports, more than 2,500 people have been affected in Maibong subdivision, and more than 400 of them are living in various relief camps. Now, what's adding to the woes of the flood victims are issues related to drinking water. However, many NGOs have also come forward to lend a helping hand in the relief measures adopted by the government. Our colleague Swadeep Hassamsa is on ground zero to give us a real picture. लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ पर जो महूर नदी है स्पेशली माइबंग का महूर नदी ने बहुत लोगों का घर को बेघर बना दिया है और जानकारी के मुताबिक 100 से भी ज़्यादा घर बेघर हो चुके हैं और इस वक्त 400 से भी ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप में फंसा हुआ है रिलीफ कैंप में वो लोग कैंप करके रह रहा है और इस वक्त हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ यही लोग हैं जो रिलीफ कैंप में रहते हैं और इस रिलीफ कैंप में अभी हम जिस वक्त जहाँ दिखा रहे हैं वहाँ पे एक ब्लॉक ऑफिस है ब्लॉक ऑफिस का एक वहाँ पे एक हॉल है वहाँ पे 200 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर इन लोगों को ये जो घर चला गया है जिसका जो घर से बेघर हो गया है उन सभी को वहाँ पर रखा और लाइव विजुअल हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये इन सभी लोगों को यहाँ पर रखा गया है कि पिछले 4 दिनों से इन लोग इसी रिलीफ कैंप में है और ये रिलीफ कैंप का ही एक दृश्य है यहाँ पर मोर देन 200 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर बैठा हुआ है और धीमा हासों में ऐसा ही 10 से भी ज्यादा डीडीएमए की तरफ से रिलीफ कैंप कर दिया गया है तो उनमें से माइबंग में स्पेशली माइबंग में ही यहाँ पर ही 200 से भी ज्यादा है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम देखने मिल रहा है पानी का जो पानी का समस्या माइबंग में ज्यादातर समस्या का जो एक हाल झार बन चुका है तो उनका जो रिलीफ कैंप में ले रहा है उनको काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा है और दादा आपसे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आपका क्या क्या सुविधा है और सरकार की तरफ से क्या क्या मदद दिया गया और सरकार का तरफ से चावल भी देता है और पानी भी देता है और दाल और आलू
ये सब देता है। जी नहीं, क्या प्रॉब्लम था? पानी का थोड़ा प्रॉब्लम, पानी में थोड़ा प्रॉब्लम है, पीने का पानी ना। हाँ। कि जैसे कि कैसे कैसा प्रॉब्लम था पानी का, मतलब साफा नहीं होता? सफा नहीं होता। बाकी सब ठीक है? बाकी तो ठीक है, चलता है कोई से। अच्छा, आपका घर अभी कैसा हाल? अभी घर तो पूरा बीस गया और बाथरूम सब ले गया और साइड का वाला सब नदी पूरा पार करके घर का किनार से लेके गए सब। आप कितना दिन से है यहाँ में? 4 दिन से। 4 दिन हो गया। हाँ। बाकी सब ठीक है, मतलब खाली पानी का प्रॉब्लम? पानी का प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि एक हमने भी कहा था कि थोड़ा पानी का यहाँ पे समस्या दिख रहा था, तो जैसे आपने उनकी उनसे ही सुना कि यहाँ का जो पीने का जो पानी का समस्या है, पीने का जो प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व कर दे तो यहाँ का जो रिलीफ के में जो रहता है उनका काफी हद तक इनका जो एक रिलीफ मिलने का एक सहायता बन सकता है। ये 18 से स्टार्ट हुआ, तो 18 से रनिंग हुआ। हम लोग बहुत प्रयास किया अच्छा कुछ चीजें होने के लिए। खास करके यहाँ में पानी का बहुत असुविधा है, क्योंकि हम लोग का निवास में ऐसे भी अच्छा दिन में भी हम लोग का पानी का बहुत असुविधा होता है। तो हम लोग पानी के लिए बहुत प्रयास किया, तो वो पानी भी अभी आने वाला है आज से। और बाकी उसको छोड़ के हमारा सिविल एसडीओ सर का तरफ से बहुत सारा सरकार का हमारा यहाँ सप्लाई हुआ है। हमने वो डेली का डेली वितरण कर रहा है। उसको छोड़ के जितना भी एनजीओ माईबंग में हमारा है, और खास करके हमारा 800 जो है वो बहुत सारा हेल्प किया है। कितना आदमी है यहाँ पे अभी 59 है। हाँ, कितना फैमिली होगा? यहाँ में 14 फैमिली टोटल। यहाँ में एक है, और वहाँ हाई स्कूल और एम स्कूल अलग अलग सेक्टर, दोनों ब्लॉक। हाँ 59 माईबंग बाजार में है, माईबंग टाउन राज्य में। और असुविधा तो हम लोग का अभी सर घर बारी चला गया, और अभी बैठने को हम लोग को जगह नहीं है। अभी बच्चा लोग है, बहुत प्रॉब्लम है वही सर। और राशन पानी तो अभी सर सरकार से थोड़ा दे रहा है। अभी हम लोग का मेन प्रॉब्लम हो गया सर, हम लोग का घर के लिए घर बारी सब चला गया, वही मेन प्रॉब्लम। हम लोग लामनिंग का घरवा एनजीओ है, जो हम लोग जब इधर लैंडस्लाइड और बारिश के लिए जो लोग अफेक्टेड हुए, हम लोग खबर को मिला है। तो उस हिसाब से हम लोग को एक सोशल एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इधर आके जो लोग अफेक्टेड हुआ है उन लोग को मदद करो। तो इसलिए पहले हम लोग 2-3 दिन आगे इधर माईबंग जो कैंप है इधर आए थे, और यहाँ आके हम लोग कितना आदमी अफेक्टेड हुआ है, कौन सा कैंप में कितना आदमी है, वो डाटा हम लोग लिया था। और उस हिसाब से घरवा के तरफ से, घरवा लामनी के तरफ से माईबंग और लांगटिंग दो जगह में हम लोग रिलीफ, जो हम लोग को कैपेसिटी है, कैपेसिटी के अंदर कुछ सामान, त्रिपाल, बाल्टिंग, मग, फिनाइल, डेटल, मस्टर्ड ऑयल और खाने का कुछ चीज हम लोग प्रोवाइड किया है। Now, meanwhile, in another worst affected district, Kachar, pumps are being used to drain out excess water from the streets and other areas. Local MLA Dipoyan Chakrabarti oversaw the process of pumping out of excess water from parts of Silchar today. हमारे साथ हैं दीपायन चक्रवर्ती, सिलचर के एमएलए। हमने देखा है दादा, बहुत दिनों से ये पोर्शन में तो बड़ा नदी का पानी है जो धीरे धीरे अभी कम हो रहा है, लेकिन यहाँ का पानी किसी ने अभी तक सोचा नहीं था कि ऐसे निकाला जाए। कैसे आया आपके ब्रेन में? देखिए, ये ग्रेटर मालोग्राम एरिया वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें 15 से 20,000 तक आदमी है। यहाँ इस साइड में रिवर साइड है, ये कंट्री साइड है। तो कंट्री साइड में हम लोग देखा है कि स्लुइस गेट का ऊपर पानी बड़ा रिवर का आ गया था, इसलिए स्लुइस गेट बंद था, इसलिए ये जमा जल मतलब पूरा मालोग्राम एरिया को बर्बाद कर दिया था। 4 दिन से लोग अंदर पानी का नीचे है। काल हम लोग ने सोचा, यहाँ का राजेश दास मेरा वाटर रिसोर्स देख रहे हैं, वार्ड कमिश्नर है, विजेंद्र प्रसाद सिंह है, विप्लव देवनाथ है, देवाशीष में सब मिलके हम लोग 2 पंप खरीदा है। अभी पंप लगाया हम लोग ने खुद के पैसे से। एक्चुअली खुद का पैसा से नहीं, मतलब मैंने सोचा अगर नहीं मिले तो खुद का पैसा से होगा, लेकिन पौरसभा ने ये हेल्प किया है, 2 पंप लाके दिया हम लोग को। मैंने मेरा कोशिश से और एक पंप लेके आ रहा हूँ 40 kb का,
गार्डन से, ये भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे यहाँ। ये कितने केवी का है? ये दोनों 15 केवी का है, तो पर आवर 2 लाख लीटर पानी निकाल सकते हैं हम लोग। तो शाम तक मेरे ख्याल से 5-6 घंटे काम करने से ये ग्रेटर मालोग्राम एरिया ड्राई हो जाएगा। अभी जब धीरे धीरे नदी का पानी कम होता जा रहा है या कम होगा, तब जो दूसरे एरिया हैं, जो कंट्री साइड के एरिया, वहाँ पे इफेक्ट होगा। तो आप लोगों ने क्या उसके लिए भी कोई अपनी कार्रवाई शुरू की है? ये तीनों पाम आज मालोग्राम एरिया में स्टार्ट किया है हम लोग। शाम तक निकलने का बाद ये कालीबारी चर में जाएगा। कालीबारी चर होके हम लोग सुभाष नगर एरिया, पब्लिक स्कूल रोड एरिया ऐसे करके जाएंगे। हम पूरे सिलचर का जो जमा हुआ पानी वो निकाल लेंगे। And with that, we'll take another quick breather. I'll be right back. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Oh, বাহ! ও বাহ! অপূর্ব ভ্যারাইটি, অপূর্ব মূল্য। ডাউনলোড মিশো। Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Welcome back, viewers. Let's continue the bulletin with a lighter story. Well, the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma has been rated as one of the most popular Chief Minister of India, closely followed by his Kerala counterpart Pinarayi Vijayan, as per the latest IANS C Voter survey. Now, C Voter conducted a year-long extensive assessment across 4 states and 1 union territory, namely West Bengal, Kerala, Assam, Tamil Nadu, and the Union Territory of Puducherry, that went to polls last year to ask a series of questions on a wide range of issues. Now, during the survey, the respondents were asked to rate the performance of the chief ministers of their respective states. Now, in the case of Assam, more than 43% of the respondents said that they were very much satisfied with the performance of Himanta Biswa Sharma, while in the case of Kerala and Tamil Nadu, more than 41% expressed the same sentiment. Well, it may be recalled that Sharma had resigned from the Congress to join the BJP in 2015. He played a pivotal role in the BJP winning the 2016 assembly elections in Assam for the first time in the electoral history of the state. Well, Sharma was also the star campaigner of the BJP in the 2021 assembly elections, in which the BJP-led alliance went on to register a resounding victory and form the government with absolute majority. The poll was conducted on a daily basis for the last 12 months, and after these chief ministers took charge of their respective offices following the fiercely contested assembly elections last year. And moving on now, the Ministry of Ayush is in the line to establish a Council of Sowa Rigpa, one of the oldest traditional medicine systems in the Indian Himalayan region, and to further strengthen this system in the country. Now, the union government is going to establish 50 hospitals along with Sowa Rigpa College in association with the Namgyal Institute of Technology, or the NIT, in Gangtok. Now, addressing the 2-day inauguration session on Sowa Rigpa at Gangtok, Sikkim, the Union Minister Sarbananda Sonowal said that in the past 8 years, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, Ayush, Unani, Sowa Rigpa or Siddha have been given huge emphasis, boosting the age-old medical practice and recognizing them alongside modern practices. Ayush, Government of India and the State Government of Sikkim, we have jointly organized this 2 days workshop on Sowa Rigpa, and the delegates, research scholars and the faculty members and practitioners from the different parts of the country, they are attending in this very, very important 2 days workshop. And as you know, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is always putting his best possible efforts to promote the traditional system of medicine. And now, because of his untiring efforts,
dynamic initiative. Now the Ayush, all system involved in the Ayush, every system is prospering, whether it is Ayurveda, Siddha, Unani, Soharikpa, Yoga, Naturopathy, and Homeopathy. In the near future, this Sikkim, in the sector of Soharikpa, is definitely going to become one of the leading state and leading sport of the world. And I believe whatever numbers of tourists that travel to Sikkim, this particular component is also going to attract them in a bigger scale. And I am sure that this particular traditional medicine will definitely play a big role in the prevention of disease and preservation of human health in the world. Well, notably, Sikkim being a hilly and clean environment, Sowarikpa will be a boom for Sikkim in the coming days and will also help to build a best destination in the field of tourism, health and wellness sector. Now, meanwhile, Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang thanked the Union Minister Sonowal for inaugurating of the 2-day-long national workshop to encourage and promote these practices. And he went on to say that in the field of Sowarikpa, Sikkim has worked out much more and is continuing its research and preservations of practices, with the first batch of students studying Sowarikpa medical practitioners are graduating very soon. Well, the inauguration session was also addressed by Governor Ganga Prasad and the Union Minister of State, Mahindra Munjapara. And this is mainly to focus and Now, 2 country-made guns were recovered today in a joint operation by the Tripura Police and the Tripura State Rifles from the forest area of Khadai Sriram ADC village in 18 Mura Hills. Now, the joint operation was launched on the basis of specific inputs. However, no individual has been arrested so far in connection with the recovery. Now, besides for what purpose the guns were concealed in the forest is yet to be ascertained, while the probe into the matter is underway. সকালে মুঙ্গিয়া কামি পিএসআর আন্ডারে খোদাই শ্রীরাম এডিসি ভিলেজ আথারমোড়া জঙ্গলের মধ্যে গোপন খবর পাই যে ওইখানে দেশি বন্দুক জঙ্গলের মধ্যে আছে। যথারীতি এই গোপন খবরের ভিত্তিতেই 10 ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট প্রদীপ রায় এবং মুঙ্গিয়া কামির উসি গৌতম দেববর্মা তাদের নেতৃত্বেই 2টা দেশি বন্দুক গাদা উদ্ধার বন্দুক উদ্ধার। এখন আমরা আপাতত সেগুলো সিজ করে নিয়ে এসেছি, এখন তদন্ত চলছে, কোথা থেকে এসেছে তার তদন্তের পরে বেরিয়ে আসে। And moving on now, preserving the rich indigenous Assamese culture and history is what has influenced Mridul Borowa, an artist from Assam. In fact, Mridul Borowa has created different artworks on Sanchi leaves on the basis of creations by Vaishnavite saints Mahapurush Shramanta Shankardev and Mahapurush Madhavdev. Now, Mridul Borowa's artworks were in display at the Indian Folk Painting Exhibition held at the National Craft Museum in New Delhi. Artists from at least 20 states took part in the exhibition. 20খন ৰাজ্যৰ ইয়াত হস্তকলা প্ৰদৰ্শন হৈছে। আমাক অসমৰ পৰা ইয়াৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে। ইয়াত অকল হেৰিয়েই নহয়, প্ৰদৰ্শনীয়ে নহয়, ইয়াত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাও আছে। যোৱাকালিলৈকে কমেও 20জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোক উপকৃত হৈছে। এয়া প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ দেউতাৰ পৰাই মোৰ এই কলা আৰম্ভ হ'ল, দেউতাই কৰিছিলে। এয়া মূল্য আচলতে কিছুমান ইয়াৰ আয়তন লৈ মূল্য হয়। এইখিনি প্ৰকৃততে এজোপা সাঁচি গছৰ এটা বহু মূল্যৱান গছ। এই গছজোপা অসমতে বিশেষকৈ পোৱা যায়। আৰু এই গছজোপাৰ বাকলি এৰুৱাই পেলাই পুথি লিখা বা চিত্ৰ অংকন কৰালৈকে এটা বহুত দীঘলীয়া এটা প্ৰণালী। এই প্ৰণালীটো শেষ কৰালৈকে যথেষ্ট পইচা পাতি খৰচা হয় বা সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। এইখিনি কৰিবলৈ আচলতে এখন সাঁচি পাতৰ পুথি আমি বিক্ৰী হিচাপে কৰিবলৈ গ'লে আমাৰ আচলতে যিটো হয় আমি সেইটো ল'বগৈ নোৱাৰোৱে। হ'লেও একেবাৰে সৰু এখনত আপোনাৰ 1000, 1500 বা
একেবাৰে সৰু এখন নিম্নতম এটা মূল্য ৰাখিব পাৰি। অসম চৰকাৰ আগবাঢ়ি আহক, এই পুৰণিকলীয়া আমাৰ এই সাঁচিপতীয়া পুথিচিত্ৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰি পুনৰ্মূল্যায়ন কৰক। ये डिफरेंट स्टेट्स के फोक पेंटिंग्स हैं और असम का ये फोक पेंटिंग्स है, इसको यहाँ पर बुलाया गया है। ये एक प्लेटफॉर्म है, दिल्ली ऐसी जगह है, कई स्कूल्स के बच्चे आए हैं, बच्चे इस क्राफ्ट्स को सीखे हैं पिछले 9 दिनों में, और कस्टमर्स आते हैं जो कि यहाँ से परचेज करके ले आते हैं। तो मकसद यही है जो आर्टिजन को बढ़ावा मिले, आर्टिजन की कला जो है, उस कला को जब तक लोग पहचानेंगे नहीं, लोग जब तक उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, जब तक वो खरीदेंगे नहीं, तब तक ना तो कला बच सकता है, ना तो कलाकार बच सकता है। तो कला और कलाकार दोनों को प्रोत्साहन देने के लिए, दोनों को संरक्षण करने के लिए ही इस एग्जीबिशंस का ऑर्गेनाइज किया गया है। हम लोग की योजनाएं हैं, जो भी लैंग्वेजिंग क्राफ्ट होता है, इंडेंजर्ड क्राफ्ट होता है, जिसमें 25 से कम लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बढ़ावा देते हैं। कोई भी मार्केटिंग एग्जीबिशन जो करते हैं उसमें उनको प्रायोरिटी देते हैं। Well, now a joint team of the Directorate of Revenue Intelligence and Coast Guard Friday seized 220 kg heroin valued over rupees 1,500 crore in the international market off Lakshadweep coast from 2 fishing boats, adding that 20 occupants of the boats were arrested. Now the fishing boats were seized and brought to Kochi. Now, the contraband came from Afghanistan and bound for Konkan coast, and it is being suspected that drugs were loaded in fishing boats at the sea near Lakshadweep. While the arrested accused will be produced in the Kochi court today. Intelligence agencies recently warned that international drug racketeers are using some of the uninhabited islands of the archipelago for flourishing drug trade and target unemployed youth from the islands and South India. Well, among the arrested 4 are from Kerala and 6 from Kanyakumari in Tamil Nadu, but the central agencies are yet to confirm this. Now, an official statement said an operation was launched by the DRI after it developed specific intelligence over a period of several months that 2 Indian boats would be sailing from the coast of Tamil Nadu and receive narcotics in large quantity somewhere in the Arabian Sea during the 2nd or the 3rd week of May. Well, viewers, has got breaking news. Just in, the Union Home Minister Amit Shah, who is in Arunachal Pradesh, has laid the foundation stone for the 51 feet bronze statue of Lord Parshuram in the Parshuram Kund at Lohit. Well, the Union Home Minister was greeted by the group of cultural heads. Shah also inaugurated a 5 feet tall idol of Parshuram, following which he addressed a mega gathering. Well, Shah was accompanied by the Union Law Minister, Kiren Rijiju, and the Arunachal Chief Minister, Pema Khandu. Well, this is the big breaking this hour. The Union Home Minister, Amit Shah, who is in Arunachal Pradesh, has laid the foundation stone for the 51 feet bronze statue of Lord Parshuram in the Parshuram Kund at Lohit. Well, the Union Home Minister was greeted by the group of cultural heads. And Shah also inaugurated a 5 feet tall idol of Parshuram, following which he addressed a mega gathering. Well, Shah was accompanied by the Union Law Minister, Kiren Rijiju, and the Arunachal Chief Minister, Pema Khandu. The Honorable MLA. And with that story, we wrap up the news at 5. I'm Aaron Lingdo. Thanks for watching. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. সাধারণ স্টিল এনে কই পরে মাইথন স্টিল এনে কই পরে ধম কই कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाया. All the best. We, the people of the Northeast, can